आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से फायरबेस में पुश नोटिफिकेशन को ग्रुप ऑफ डिवाइस में सेंड करते हैं। ग्रुप ऑफ डिवाइस में नोटिफिकेशन को सेंड करने के लिए हमें कोई स्पेसिफिक टॉपिक को सब्सक्राइब करवाना होगा। जो जो डिवाइसेस में हम नोटिफिकेशन को सेंड करना चाहते हैं उसको सारे डिवाइसेस में हमें उस टॉपिक को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के लिए हमारे पास फायरबेस में हमें सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब करने के बाद हम उस टॉपिक के थ्रू ग्रुप ऑफ डिवाइस में सेम नोटिफिकेशन को सेंड कर सकते हैं और ग्रुप ऑफ डिवाइस को नोटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए हम पहले देख लेते हैं। हमारे प्रीवियस वीडियोस में हमने पहले ही रेट्रोफिट और वॉली दोनों के बारे में बात कर ली है। अब हमारा तीसरा वीडियो बनेगा, उसमें हम बात करेंगे कि ग्रुप ऑफ डिवाइस को नोटिफिकेशन किस तरह के सेंड करते हैं। ग्रुप ऑफ डिवाइस में नोटिफिकेशन सेंड करने के लिए आपने अगर मेरे प्रीवियस वीडियोस देखे तो उसमें हमने बताया था कि वॉली और रेट्रोफिट से कैसे नोटिफिकेशन को सेंड करते हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे टॉपिक को कैसे सब्सक्राइब करते हैं और उस टॉपिक पे नोटिफिकेशन को कैसे सेंड करते हैं। तो मैंने अपने एक्सएमएल पार्ट के अंदर मैंने दो न्यू बटन्स क्रिएट किए हैं और पहले से ही ये हमारा सेंड नोटिफिकेशन बटन क्रिएटेड था और हमने अब सब्सक्राइब बटन और अनसब्सक्राइब बटन को क्रिएट किया है। और अब इन पे हम क्लिक लिसनर लगाएंगे और उसमें जो स्पेसिफिक काम करना है जैसे कि सब्सक्राइब करना है और अनसब्सक्राइब करना है उसके लिए कोड लिखेंगे। उसके लिए मैंने मेन नोटिफिकेशन का में पहले बटन को क्रिएट कर लिया है। उसमें बटन को क्रिएट करने के बाद उसमें सेट ऑन क्लिक लिसनर लगा दिया है। सेट ऑन क्लिक लिसनर लगाने के बाद मैंने उसमें पहले हम देखते हैं कि टॉपिक को कैसे सब्सक्राइब करते हो बाद में अनसब्सक्राइब कैसे करते हो। दोनों के लिए सेम ही कोड रहने वाला है। सब्सक्राइब करने के लिए हमें फायरबेस मैसेजिंग डॉट गेट इंस्ट्रक्ट डॉट सब्सक्राइब टू टॉपिक और हमें टॉपिक का नाम प्रोवाइड करना है। उस टॉपिक को हमें सब्सक्राइब करवाना है। तो और उसके बाद एड ऑन पब्लिक लिसनर। अगर टॉपिक सब्सक्राइब हो गया है जैसे कि टास्क कंप्लीट हो गया है तो इफ टास्क इज सक्सेसफुली completed then we have to be to the topic has been subscribed and if not the occur then we have to be to topic not subscribed. The same code is here for this. We have to be change subscribe to topic then unsubscribe to topic on the completing task. We have to say set that topic has been unsubscribed and topic has been subscribed not unsubscribe. So we have to be past both the topics and we have to be subscribe topic and we have to be unsubscribe topic update one. After doing this, we have to be send a notification. For this, we have to be uh, mm, send notification through retrofit. In this video, I will showing how to send a group of users to notification using retrofit. For this, I created a method on this send notification button में और send notification to the subscribe topic. Or for this, we have to create an update API in our previous videos in this playlist. You can watch before this video and after you can see this video. Or you have to. I will provide the data code into the GitHub repository, and the link of this GitHub repository will be in my comment section. You can go to all code in this in the repository. After update API, we have to be called this send notification method. That notification method are inside it update API. Inside update API, we can go and here we have to be called this send notification 23 API method and we have to be provide a main object. We created main object inside our model class. We created main object and we created message object and we created notification object. In these objects, we have to be take care of this the title, body, and this name are same as this. You have to be don't change or alter name use. After this, we have to be inside our subscribe send notification to subscribe topic. We have to be provide main object. Inside main object, we have to be provide message object. Inside message object, we have to be provide a token. In the case of sending a notification to a specific device, we have to be provide a specific token to this device. In case of topic, we have to be provide a topic name like this.
we have to be first we have to be write topics, and we have to be name of the topic. We have to be write name of topic which we have to be sent to be notification. After providing a token, we have to be provide a notification object. Notification object take care of title and body. We can provide any title as a name or anything, or inside the body we can provide any other data like in JSON string or any ID integer. After we have to be in queue into retrofit, and on response we post the message it been sent. On error we post that message sending failure. Now we check its work or not. So I can run in the three emulated device, uh, Nexus 6 API 34, Pixel 3 API 29, and 30.5 pre API 34. Okay, so now I run API on the 29. Pixel 3 API 29, the Android application has been installed, and so we have to be try to send a notification to the uh, group of devices. Although we have not subscribed any topic, so the notification cannot be sent to any device. So okay, now I can send a notification. Now notification has been sent. The toast has been sent, but the any device has not subscribed the topic, so the notification has been not sent. Now I can subscribe a topic. The toast has been seen, topic has been subscribed. So now I'll send the notification. The only this device can subscribe this notification. So the notification seen only on this device. Okay, so now notification has been coming. The notification come from this update topic, and what is the part of bodies that we provided in this notification, and this local notification has been sent. Now I can subscribe to the other device. Like I can run this application before, and I can subscribe now. The topic has been subscribed, and so now I can send a notification. I can clear a notification in this device and send a notification through this device. Now notification has been sent to the both the devices. Yes, in this device and now in this device also the notification has been coming. Now I can unsubscribe the in the Pixel 3 29. The topic has been unsubscribed, so now notification has not been coming in this device, and I clear the notification first in the both devices. Now I send a notification through this device. The notification has been sent to the one device only. In this device, no notification has been coming. In this device, the notification has been coming. The code is work fine. The the code is been provided to my GitHub repository. I will be provide a link to the inside my comment section. Thank you very much. Like and subscribe to my channel. So it's a developer.